Good morning, everyone. I am Pranali, your host for today. I welcome each and everyone for today's Sadgun Sang Meet. This is our 272 virtual webinar. Topic for today is inspection and testing of material used on construction sites, cement, aggregates, reinforcement bars, and bricks, which shall be taken by Mr. Vijay Vishwakarma. Agenda for the Sadgun Sang Meet, virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Mr. Vijay Vishwakarma, question and answer session, closing session. Dr. Sundar Kataria, Chairman and Managing Director of ICS Group Companies, Sadgun Sang, conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sang is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Dr. Sundar Kataria, Designation and Organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. Academic Qualification, Mechanical Engineer AIM. Honorary Doctorate, Business Management. Experience, Nuclear RAP. He started his career in building India's first nuclear power plant at Rawat Kota, Rajasthan. Oil and gas EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay High since its inception. DNV. He was a head of industry and offshore development with DNV for 2 decades. ICS, he is a founder of a first Indian conformity assessment and inspection body known as International Certification Services Private Limited, which is a provider of a total quality solution under single umbrella with a wide spectrum of services. Achievements and awards. Lifetime Achievement Award of NACE Corcon received several national and international awards. Now I request Dr. Sundar Kataria sir to virtually inaugurate today's session. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of the keynote speaker. Mr. Vijay Vishwakarma, Designation and Organization, Project Coordinator Civil, International Certification Services Private Limited, Academic Qualification, Diploma in Civil, the Institution of Civil Engineers India, New Delhi, Bachelor of Engineering Civil, the Institution of Civil Engineers India, New Delhi, Internship in Structures and Foundation Analysis and Design, Area of Specialization, Construction of Residential Buildings, Repair and Rehabilitation of Old Structures, Maintenance of colonies and office buildings, quality control and quality assurance, third-party inspection and compliance monitoring, achievements and awards, won Best Innovation Bridge Design Award by Civil Simplified, Concrete Mix Design from Ambuja Foundation, strong technical and leadership skills demonstrated across multiple infrastructure and residential projects. Welcome, Mr. Vijay, sir. Over to you, sir.
Okay, good morning, everyone. So today's session, one sec, let me start the slide first. Okay, today's session is focuses on inspection and testing of construction materials used on site. Uh, as a TPI engineer, we are, independent quality controllers, right? Our responsibility is not just witnessing the test, uh, but our responsibility is also to prevent the structures from failure, right? So this is the agenda for the today's session. Okay. Now, why material inspection is critical? You know, first, uh, mostly poor materials. See, reports says that around 70% failures occur due to poor material control. Okay. Next is improper sampling. Improper sampling leads to misleading the test results. Okay. Third is the fake MTCs. Generally, fake MTCs are very common in market. You know, so as a TPI, we are responsible to identify these kinds of poor practices. Okay. So role of TPI engineer in material inspection and testing. In terms of material inspection and testing is, first is we should do independent inspection of the materials, okay, and witnessing the samples. Third is the verification of MPCs and lab reports. Fourth is the documentation control, and fifth is the reporting of non-conformity. You see, reporting of non-conformity means the whenever you reject the material, it is non-conformity. No, it is non-conformity. Okay. So reporting that non-conformity is I'm talking about here. Next, we are going to proceed with the material inspection process. Okay. First is the document verification. PO specification, test certificates. Second is the physical examination and sampling. Third is the laboratory testing as per approved methods. Fourth is the compliance verification with the standards. And fifth, the inspection reports generation and the approval. Now we are going to proceed with the cement inspection and testing. Okay, the module 1. Now, cement is the primary binding material in concrete, right? For that, we should check for IS code compliance. Okay. We should check packaging, brand, manufacturing date, inspect for moisture, lumps, and discoloration, validate the test certificates from the manufacturer. You know, in as a on field, what checks you need to do as a TPI is, okay, we are going to keep this since not only the TPI have joined here in this session, but I see the mostly like common peoples have also joined this session. So we would keep this session to bilingual, not only in English, we would also speak in Hindi as well. Okay. So for field check, for cement inspection, you see you have to verify the IS mark. आपको उस बैग के ऊपर लाइक एक IS मार्क होगा. मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. Okay, like this. Okay. So see, you can see the here ISI mark. Okay. Now check the manufacturing date
यहाँ पर एक साइड में मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा होता है. ओके. ऑल्सो द बैच नंबर. ensure no lumps ensure no lumps are present. इसके लिए मैं एक चेक फील्ड प्रॉपर फील्ड चेक कैसा करता है इसके आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ये लाइक ये जो बैग की हम इंस्पेक्शन क्या क्या करने वाले हैं ना फील्ड पर, वो ये जनरली ये चीजें हमको चेक करनी पड़ती है. लाइक ब्रांड क्या होगा, मैन्युफैक्चरर कौन है, ओके, सीमेंट का ग्रेड क्या है, व्हाट इज द नेट वेट. ओके, दिस इज एवरीथिंग इज गिवन ऑन द बैग इटसेल्फ. ओके, वहां पर एक आईएस कोड भी लिखा हुआ है 1489. ओके, सो दैट आल्सो gives us the detail about the what type of cement it is. Okay, basically 1489 is for the Portland pozzolana cement. ओके, फ्लाई एश बेस. यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे सीमेंट ग्रेड के इसमें, तो वहां पे लिखा हुआ है फ्लाई एश बेस मिक्स सीमेंट है ये. ओके, 1489 दो पार्ट्स में है. ओके, फर्स्ट बिफोर showing this test certificate, I would give you the details about the how to do inspection on site of the cement bag receive. Okay, you see आप अपना लाइक पहले तो सीमेंट बैग आप ओपन करोगे. ओके, देन आप अपना हाथ उसके अंदर लाइक डालोगे. एंड अगर आपको वो ठंडा लगता है लाइक कूल, if it is feeling cool, then the cement is good. But if you can feel some heat, okay, then you should realize that the hydration process has been started of the cement. So इसीलिए वो हीट फील हो रहा है. ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेंथ जो होगी ना सीमेंट की वो धीरे धीरे कम हो रही है. ओके, सो दिस इज फर्स्ट चेक ऑफ द सीमेंट ऑन फील्ड. जनरली ये जनरल एक एग्जामिनेशन होगा आपका. लाइक कलर भी हम चेक कर सकते हैं. वो मोस्टली ग्रेइश ग्रीन होना चाहिए. ओके, सीमेंट का ऐसे तो फिजिकल एक चेक होगा. बट जनरली वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस फिजिकल चेक जो हम साइट पर कर रहे हैं. हमें लैब टेस्ट भी करना जरूरी होता है. लाइक अल्टीमेट डिसीजन हमारा रिजेक्शन का और एक्सेप्टेंस का विल बी बेस्ड ऑन द लैब टेस्ट ओनली. ओके, सो इन लैब टेस्ट fineness test is what we have to see is standard consistency of the cement, setting time of the cement, soundness and the compressive strength. ये अगर हम लाइक ये टेस्ट सर्टिफिकेट को अगर मैं जूम करूंगा ना तो इसके अंदर के सारे पैरामीटर्स हमें दिखेंगे. इसी वन सेक. केमिकल पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको. ये केमिकल पैरामीटर्स ये ओके, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर निर्भर करता है. सो अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट के अलग अलग केमिकल पैरामीटर्स होंगे. एंड ऑल्सो फिजिकल पैरामीटर्स भी अलग होंगे. ओके, सो इसी फिजिकल पैरामीटर्स में मैंने जो अभी बात की थी लाइक फाइननेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, साउंडनेस. ओके, ये सारे जो लाइक ये रिजल्ट्स जो भी आएंगे ना तो इनकी जो रेंज होंगी ना रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमें IS 269 2015 में मिलेगा. ओके, सो ये IS 269 2015 ये आई थिंक ये जो टेस्ट सर्टिफिकेट है ये हम अगर इसके अंदर और डिटेल्स में देखेंगे तो ये 43 ग्रेड के लिए. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC 43. ओके, इसमें और एक चीज हमें ये चेक करना है कि लाइक ये डिस्पैचिंग का जो बैच है लाइक ये बैच कौन से वीक का है, तो यहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है. ओके, सो ये हमें यही चीज बैक पर भी चेक करना है कि उसके अंदर जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है उसके अंदर जो वीक नंबर है वो इसको इस सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है या नहीं. ओके,
नेक्स्ट अगर आप ये देखेंगे लाइक ये कौन से वीक का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 3/12 नहीं है, इट इज 12/3/2025। सो 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक का जो वीक है, वो उस वीक का ये टेस्ट रिपोर्ट, उस वीक में जो ये बैच होगा ना, तो उसका ये टेस्ट रिपोर्ट है। ओके। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि लाइक एक क्यूएपी, अगर हम इसका देखेंगे मटेरियल टेस्टिंग का, सो वो कुछ ऐसा हो। ओके। सो हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ओपीसी 43। We'll continue with OPC 43, and these are the physical test requirements, test parameters. So fineness should be minimum 225 for the OPC 43, huh? Minimum 225 meter square per kg. Okay. The testing procedure should be as per IS 4031. Next, the frequency is also important. Okay. कब आपको ये टेस्ट करना है, राइट? सो फ्रीक्वेंसी की बात हम आगे और डिटेल में कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट टेस्ट होगा वो साउंड टेस्ट। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, रेंज होनी चाहिए लाइक इट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। ओके। वो एक अपेरेट टेस्ट होगा, और टेस्ट से उसमें लाइक जो रिजल्ट आते हैं हमें, वो 10 mm से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये टेस्ट के डिटेल्स हमें 4031 पार्ट 3 में मिल जाएंगे। ओके। Next is setting time, and which is we check initial and final setting. Initial setting time should be greater than 30 mm. Okay, it should not be less than 30 minutes, sorry. And final setting time should be should not be greater than 600 minutes. That is 10 hours. Okay. Then the next is compressive strength. 3 days का, अगर ये ओपीसी 43 ग्रेड है, तो 3 days का 23 मेगा पास्कल होना चाहिए, न्यूटन पर mm²। ओके। 7 days का 33 होना चाहिए, एंड 28 days पर ऑब्वियसली 100% 43 मेगा पास्कल होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट, इट शुड बी अराउंड 28 to 30% बाय वेट ऑफ वाटर। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट, सो ये वेट ऑफ वाटर है 28 to 30%। ओके। required to generate that consistency of the cement paste. Next is you see the types of cement. There are more than 15 types of cements, okay, used in India. All are used for various purposes. Okay. So few of them has been shown here. One of those are OPC 43, 53. So you can see here I haven't mentioned 33 grade because it is now obsolete and it is discontinued. Only 43 and 53 grades are used as an OPC cement. Okay. And the code is superseding. The previous code for OPC 43 was different, and 53 was different. Now only IS 269/2015 is superseding all those codes. Okay. So and next is Portland Pozzolana Cement, PPC. You can see the IS code over here, respective IS codes. PSC, rapid hardening Portland cement, white Portland cement, hydrophobic Portland cement. So all the different types of cement have different purpose. Okay. So you cannot just use it for all kind of structures. Next module is about the aggregates. Okay. Aggregates, inspection and testing. You see, aggregates have two types, like
उसकी क्लासिफिकेशन है फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट्स इज ऑब्वियसली द सैंड जो हम यूज करते हैं, लाइक ओके, एंड कोर्स एग्रीगेट आर योर metal 1, metal 2 like 10 mm and 20 mm. Okay. Now we'll discuss about the sand. Sand has different classifications. Those are river sand. Okay. Generally, this is used on brickwork, plastering, and you can also use it in concreting. This is a good type of sand, you can say, which has a smooth and rounded textures. Okay. Next is concrete sand. Concrete sand is engineered to use in concrete, okay, to increase the performance of the concrete. Okay. Mostly it is used on foundation, driveways, and sidewalks. Now, about concrete sand, it is obtained from crushing the quarried rock. Concrete sand is essential component for variety of construction tasks. Okay. Next is the manufacturer sand. You see, M sand is produced through the crushing of specific hard rock, catering to the needs of high strength concrete and plastering works. It has uniform particle sizes, so you can use it on concrete production and plastering as well. Okay. Next, we'll see the fine and coarse aggregate from concrete matrix, quality critical for strength. Okay. हम इसकी inspections देखेंगे. Like, okay. So visual inspections we'll do for contamination and dirt check. Check for clay, silt, and organic matters. We ensure that it has proper size gradations. Okay. We verify the sources and query documentation is done. So that was about the fine aggregates. Now we'll see about the coarse aggregate. So the classification of coarse aggregate which are used on site are the 10 mm and 20 mm. Okay. So now if we see the QAP of the fine aggregates, these are the testing parameters which are deleterious materials, organic impurities, okay, seal content, particle size distribution, bulking of sand, okay, and these are the requirements which is for seal content, it should not be more than 3 to 8%. For particle size distribution, obviously you'll have to do sieve analysis, and it has different, you will get different zone grading, like zone 1, zone 2, okay, and the bulking of sand, it should be around 15 to 30%, and the testing procedures should be as per the IS code references given. Okay. Next is the coarse aggregate. Same, mostly the deleterious materials, the percentage of soft materials into it, and the silt content, the particle size distribution, estimation of organic impurities, surface moisture. All of these parameters have to be tested before using the aggregates. So when you're going to test this is, you have to do one test at commencement of the work for the approval of each sources. So whenever you change the source, you will have to send it for the lab test. Okay. And generally the frequency is around one test
for 50 cubic meter or part thereof. Okay. Continuing the testing parameters are the bulk density as well. We'll have to check the aggregate crushing strength, the aggregate impact value, and aggregate abrasion value. Next, we'll continue with its key testing parameters. So we have already discussed these all in the QAP earlier, which we saw. So sieve analysis, fineness modulus for the uniform grading, moisture content absorption, okay, aggregate impact value, flakiness and elongation index as well. Okay. Now we'll see the third module, reinforcement bar inspection and testing. So ये reinforcement bar यानी कि सलिया जो यूज होता है साइट पर, ओके, उसके कुछ की पैरामीटर्स है लाइक इंस्पेक्शन के लिए. सो हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं फॉर टू चेक द रस्ट एंड करोजन. ओके, वी वेरीफाई डायमीटर एंड डिफॉर्मेशंस इन द बार of the bar. Okay, we check meal certificates and its traceability. We ensure that the proper storage and handling is done on site. You see, reinforcement bars provide tensile strength to the concrete, right? So field verification is important. What we saw in this inspection parameters, that is visual inspections for rust and corrosions, and we verify diameters and deformations, if any. And also apart from these, for field inspection, we can say अगर हम लाइक वो बार को देखेंगे, ओके, उस पे एक बार आईडी होती है, ओके, उस पे लिखा होगा बार का डाया एंड बार का ग्रेड होगा, ओके. सो हमें वो चेक करना है, लाइक. एंड जो एमटीसी में होगा, लाइक एमटीसी में हीट नंबर होगा, हमें हीट नंबर चेक करना है, ओके. एंड हीट नंबर ऑब्वियसली जो बार का लॉट है, लॉट के ऊपर होता है, ओके. So we should cross check it with the MTC. Okay, we should check the weight of the bar as well. वो कितना लाइक स्टैंडर्ड है या नहीं. वो पर मीटर वेट, हमें बार का वेट एक मीटर लेंथ की कट करके उसकी वेट चेक करनी है, ओके. सो these are the parameters which we have to do on site, okay. And then lab test में like tensile strength होगा, yield strength होगा, elongation होगा, bend test होगा, rebend test होगा. So now next is we'll see about the key testing parameters. Tensile strength, okay, it should be as per IS 1786. Yield strength verification or percentage elongation and ductility and hardness testing, okay. केमिकल कंपोजिशन एंड वेरिफिकेशन. सो अगर आप ये लाइक लैब टेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर्ड हो जाती हैं, ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट द ब्रिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. Bricks are used in masonry works, right? So masonry units quality affects wall durability, right? So visual inspection and mechanical testings are required. So for that, we need to do, we need to check the dimensions and uniformity of the brick on site. We need to inspect for cracks, chips, and defects. We need to verify the color consistency and its finish. And we need to check, confirm that the manufacturer certification by
looking at its okay, like the MTC. Okay. Next is on field. We missed one thing on field test. We should also check for its like वो दो ब्रिक्स को अगर आप हम एक साथ ये करेंगे ना लाइक स्ट्रक करेंगे सो उसमें एक मेटेलिक साउंड आना चाहिए ओके रिंगिंग साउंड आना चाहिए सो ये टेस्टिंग हो गया फिजिकल टेस्टिंग ऑन साइट नेक्स्ट इज आप उसको लाइक 600 मीटर्स से 600 यानी 2 फुट से आप उसको ड्रॉप करेंगे ड्रॉप टेस्ट उसका करेंगे लेकिन वो ब्रेक नहीं होना चाहिए उसके एजेस भी ब्रेक नहीं होने चाहिए सो दैट इज द एक हम जनरल थंब रूल है वो ब्रिक्स को चेक करने का ओके ना फर्दर उसके टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या होंगे लाइक हमें लैब टेस्ट करना होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें लाइक कौन कौन से पैरामीटर्स देखने होते हैं सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट which should be as per the IS 3495 part 1 and water absorption test okay 3495 part 2 okay and the effluence test which is the salt deposits on the bricks okay then the dimension and flatness verification modulus of rupture that is the flexural strength of the brick इन सारे पैरामीटर्स के लिए हम लैब टेस्ट करते हैं ओके now next is we are going to see the sampling of these all the materials which we saw earlier and the documentation and NCR. NCR is the non-conformity okay reporting. So sampling frequency guidelines for cement one sample per 50 bags minimum. Okay, you need to take one samples per 50 bag. For aggregates, you need to take one sample. अब वो कितने सैंपल्स लेने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे ओके यू नीड टू टेक वन सैंपल ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है सो वन सैंपल फॉर एग्रीगेट्स शुड बी टेकन पर 50 loads or the truckloads. Next is the about the reinforcement. Okay, one samples per 50 tons of the material. And for bricks, we need to take one sample per okay one sample per 10,000 bricks per batch. Okay. Sorry for the disturbance. Next is the okay sampling का हम कह रहे थे like आगे भी हम like उसके क्या क्या हमें samples लेने हैं. Okay. So I'll continue with the sampling one. So in the same, if we consider the cement, okay, उसकी samples कितने होने चाहिए? Like, okay, so the sampling should be recommended quantity to send to the lab is 12 kg and उसमें ये सारे parameters है like test में obviously fineness के लिए 100 ग्राम लगेगा consistency check करने के लिए 400 and so on so the recommended weight of cement we need to send to the lab is 12 kg एंड इस बात का एक और ध्यान रखना लाइक वो जो सैंपल्स हम लेंगे ना 12 kg वो किसी एक बैग से नहीं होगा वो मल्टीपल बैग से हमें मिक्स करके 12 kg हमें लैब में देना है ओके सो दैट जो रिजल्ट आए वो कंसिस्टेंट आए ओके नेक्स्ट फाइन एग्रीगेट्स दैट इज द सैंड सो सैंड के ये टेस्टिंग पैरामीटर्स है एंड उसकी अप्रोक्सीमेट ये क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती है लैब टेस्ट के लिए ओके सो जनरली एक थंब रूल लाइक अगर कंसिडर करेंगे तो हमें 30 kg
क्वांटिटी ऑफ सैंड भेजना होगा लैब टेस्ट के लिए। ओके, सो ये सैंड की बात हो गई 30 kg। एंड देन दी कोस्ट एग्रीगेट, जिसमें हम लाइक मेटल और मेटल टू M1 M2 10 mm 20 mm के दोनों के देखेंगे, तो लाइक 10 mm को हमें 40 to 50 kg सैंपल भेजने होंगे। ओके, एंड फॉर 20 mm 60 to 75 kg हमें लैब में भेजना होता है, एंड इन पैरामीटर्स को चेक करने। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है? Important is cement sampling shall be done as per IS 3535, which is the sampling of cement. Okay. And then the aggregate sampling shall be done as per IS 2430. Samples must be clean, representative and free from contamination. वो सैंपल साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, एंड उसकी हम जो सैंपल की पैकेजिंग भी करेंगे ना, वो पैकेजिंग भी एक ऐसी होनी चाहिए, वो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, खासकर लाइक सीमेंट के लिए। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखना है, लाइक वी हैव टू check this before sending the samples to the lab. And one we missed is the steel. Okay, so we'll check the steel samples as well. Steel samples हमें generally 3 meters के ही लेने होते हैं. Okay. So basically टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट, रिबेंड टेस्ट, इन सारे टेस्ट को कंसिडर करने के लिए लाइक तो टोटल अराउंड 3 meters का लेंथ चाहिए होता है। ओके, सो बट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डाया जितने होंगे उतने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको देने पड़ेंगे। लाइक 8 mm होगा, 10 mm होगा, तो 8 mm के लिए 3 meter अलग, 10 mm के लिए 3 meter अलग। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन टू टेक द सैंपल्स। एंड सैंपल सिलेक्ट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि लाइक सैंपल मस्ट बी टेकन रैंडमली फ्रॉम द लॉट। ओके, एंड डू नॉट सिलेक्ट visibly damaged parts. Okay, tag properly with heat number, diameter, grade, and supply details. Prefer mechanical cutting, avoid flame cutting. Obviously ये तो होगा नहीं, लाइक फ्लेम कटिंग, गैस कटिंग तो होता नहीं है, मैकेनिकल कटिंग ही इज प्रिफर्ड। ओके, एंड रिकॉर्डिंग सैंपल्स डिटेल इन स्टील इनवर्ट रजिस्टर, एंड ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का हम लाइक लास्ट में हम देखेंगे। ओके, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। नाउ सो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने जैसे कि बोला था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में क्या क्या होनी चाहिए, लाइक परचेस ऑर्डर, मटेरियल रिक्विजिशन, वेंडर टेस्ट सर्टिफिकेट्स एंड compliance documents, sampling records with photo documentation, okay, laboratory test reports and compliance metrics, and the final approval and certification of the TPI, and also the test registers, NCR logs, calibration certificates। इन सारे चीजों का रिकॉर्ड होना जरूरी है। रिमेंबर, डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि काम ही नहीं हुआ। ओके, so documentation is very important। Okay, so you as a TPI you have to ensure that all these documentations for the material inspection and testing is done। Okay, now case studies देंगे। Okay, before we start the case studies, I want to say that if material does not meet the specifications, identify deviation, issue NCR, okay, ensure corrective actions is taken, and witness retesting। अगर वो लाइक एनसीआर इशू हो रहा है तो ऑब्वियसली रीटेस्टिंग हमें 100% विटनेस करना, एंड क्लोज द एनसीआर only after the compliance is maintained।
सो अब हम केस स्टडीज की बात करेंगे. केस स्टडी 1. सपोज के सीमेंट बैग with the excessive moisture is detected. ओके, सो उस केस में आपको क्या करना है? एक्शन होगा आपका, डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन, photographs should be taken and reject the material straight away. Communication: notify the site engineer and the contractor for this. Escalation, like documentation, document in TPI reports and archive. Escalation तो obviously ऐसे ही होगा, like हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हमारी रिपोर्ट में हम लिखेंगे. ओके. एंड रिमूव नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल फ्रॉम साइट. साइट से उसे हमें निकाल देना है. सेकेंड केस स्टडी हम लेंगे जहां पर स्टील बेंड फेलियर दिखाई देता है. ओके, सो उस केस में हमें उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है. सब स्टैंडर्ड बार हमें, मतलब रूट कॉज एनालिसिस करने पर हमें ये पता चलता है कि वो सब स्टैंडर्ड बार है. ओके, सो ऑब्वियसली हमें तो उसका यूज नहीं करना है, बट एनीवेज अगर वो पर्टिकुलर लाइक ऐसा है कि यूज करना ही है हमें, सो वी नीड टू टेस्ट बिफोर यूज, नॉट आफ्टर कास्टिंग. ओके, यूज करने से पहले हमें टेस्ट करना है उसको. तो ये दो केस स्टडीज हुई. अब हम क्विजेस लेंगे. उसके बाद हमारा लाइक क्विजेस खत्म होने के बाद हम कोई क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशंस करेंगे. ओके. मैम, वन सेकेंड. So we have enabled the chat and you can unmute yourself as well. So first question is, brick absorbing more than dash percent of water should be rejected. ये options है, like okay, ये options है 20%, 22%, 25, 50. You can answer your you can answer this using the chat, or else you can directly unmute yourself and answer the question. 20%. No, it is 20% is correct. उससे like वो acceptance है, वो 20%, उससे कम होना चाहिए. And उससे ज्यादा हुआ तो obviously like 25% is to be rejected straight away. And 22 भी like वो भी rejected ही होगा. 20% is correct for the lowest, like जो maximum allowed है ना limit उसके लिए. Okay. Next is second question is, water from concrete comes out
to the surface of the concrete, and it is known as what? Bleeding. 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 Correct. Hmm. Bleeding is correct. Third question is main cause of bleeding occurs due to what? कौन से वजह से ब्लीडिंग होता है? Above, sir. सॉरी, All the above, sir. all the above. Correct. Fourth question is which of these following elements are included for inspection? Options है measurement, examination, comparison. आप inspection अगर कर रहे हो तो obviously कौन से ये parts, कौन से All parameter? the above, sir. All the above. Let's see. It's correct. Cement sampling procedure is covered under the options है cement sampling कौन से IS कोड के थ्रू होगा? ओके, which IS code we need to follow for the cement sampling procedure? See, it is IS 3535. Okay. Next question is reinforcement steel bars for concrete are specified in, कहाँ पर होता है, कौन सा कौन सा IS कोड reinforcement steel bars के लिए है? People, you need to answer fast. See, it is only 1786. Okay. Next is which test determines the ductility of the reinforcement steel? And those tests are, ये options है, उसमें ये कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे कि हमें डक्टिलिटी ऑफ reinforcement steel मिल सकता है? Bend test, sir. Bend test. Bend test. Bend test. Okay, correct. Bend. Next, eighth question is if steel fails in bend test, the TPI engineer should क्या करना चाहिए? अगर bend test में fail हो गया तो should you Reject the load. हाँ? Reject the load. Reject. Correct. Ninth is the efflorescence test is conducted on किस मटेरियल पर हम efflorescence test करते हैं? Sorry, Brick test. brick. Sorry, Brick test, sir. yeah, brick is correct. Brick is correct. Brick test. Okay. Next question is minimum number of cement bags recommended for sampling is typically कितना होना चाहिए? Is it 5, 12, 10? No, no, it's not 5. It's 12. So that's it. Yeah, 10 quizzes stay. Okay. Now, if you have any doubts, any questions, you can ask me and we will discuss on that. Sorry. Okay. It's okay. So if anyone has question, you can ask me directly. Either you can use the audio or else you can put the question on the chat. Thank you, sir, very much for your presentation. Okay. Do you have question? I am Krishna Kharel from Kathmandu, Nepal. Okay, from Nepal. Sir, it was very good presentation. Thank you very much. Just I have a small query. Okay, what is the question? Regarding the use of raw materials in the manufacturing process of the cement. Here in somewhere I have heard that in while manufacturing the Pozzolana Portland cement PPC, yes. where the this clinker and fly ash
and gypsum are used or the major raw material. See, And huh? yes, no, just my question is I have heard some instead of this fly ash and clinker, some percentage of the crusher dust is also used. Okay. Is it, but the physical test is meeting the requirement. And what will be the long-term impact of in the cement? Could you justify, sir? See, one sec. PPC and obviously chemical compositions. So, like you have to follow the chemical strictly chemical composition should be as per the IS code. Okay. Yes, yes. Okay. So, उसमें like in that, if you open the IS code, na, you'll see Yeah, that there is the range of the composition of the like chemicals. Okay. yeah. Suppose the magnesium oxide and the lime, Uh-huh. whatever Uh, the requirements of the chemicals are there, there is a range. Okay. uh-huh. So you just have to ensure that the whatever the manufacturer is choosing the chemical composition, it should be within that range. Okay, अगर Yes. वो उस range के अंदर है, like within that range, then you don't have to worry about the strength. Obviously वो उसको comply करेगा. It will comply that की future durability जो होगी वो अच्छी होगी. Okay. नहीं सर, मेरा बात ये है कि सर वो क्रशर डस्ट जो है दैट रॉ मटेरियल इज नॉट रिकमेंडेड इन द स्टैंडर्ड. वो Okay. क्रशर इंडस्ट्री का डस्ट जो है यस मैं वो, समझ गया. ओके. हाँ, तो वो ऑब्वियसली यूज उसके कर लिए सकते आपको कि नहीं लोअर अमाउंट में, वेदर दे कैन यूज और नॉट 8 to 10% और समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली उसके लिए देखो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, अगर वो एक नया प्रोडक्ट है लाइक नया मटेरियल यूज कर रहे हैं. ओके. हाँ हाँ तो उसका हाँ सबसे पहले तो रिसर्च होना चाहिए. ओके. हाँ जी. उन्होंने वो प्रोडक्ट को मल्टीपल टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किए हैं एंड उसका जो रिजल्ट है वो उसके साथ शेयर करना चाहिए. देन ओनली इट इज अलाउड टू यूज इट ऑन दी पब्लिकली, उसको यूज करना अलाउ होता है. ओके. नहीं सर, वो तो मैंडेटरी स्टैंडर्ड है, उसमें तो सिर्फ क्लिंकर और फ्लाई एश और जिप्सम यूज करना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है. ओके. नहीं, हाँ आप हाँ. किस कौन से मटेरियल की बात कर, लाइक क्या यूज किया है ऐसा, लाइक आप बोल रहे हो? मेरे क्रशर डस्ट यूज करते हैं समवेयर अच्छा, 8 to 10. डस्ट डस्ट. ओके. हाँ, क्रशर का वो गिट्टी क्रशर, गिट्टी नहीं जो. नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली मैंने इसलिए तो कहा ना कि आपको पहले तो वो ये रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करने हैं. अगर हाँ आप जी. वो यूज भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हाँ लाइक आईएस कोड आपको कभी ऐसा नहीं कहता है कि लाइक आप नया मटेरियल्स यूज नहीं कर सकते हो उसके अंदर. हाँ हाँ सीमेंट ऑब्वियसली सारे अभी मार्केट कॉम्पिटिटर्स यही देखते कि हमारा प्रोडक्ट नया क्या होगा. ओके. हाँ सो जी. वो उसके नया बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको नए मटेरियल्स चाहिए, तो उसके लिए एक रिसर्च आपको खुद से कंडक्ट करना पड़ता है. एंड हाँ जी. यू हैव टू शो दैट योर प्रोडक्ट इज complied with the IS code requirements as well. ठीक देन है. गवर्नमेंट हैज टू अप्रूव इट दिस कोड. ऑब्वियसली वो अप्रूव करेगा ना, ये स्पेशल हाँ जी. केसेस में होता है ये. ओके. हाँ जी. अगर उन्होंने उनके रिसर्च रिपोर्ट सब कुछ ओके है, राइट, हाँ जी. सो ऑब्वियसली अलाउड है, ये चीजें अलाउड होती हैं. बट हाँ जी. सब्जेक्टेड टू आपकी जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए. ओके. आई होप हाँ यू जी. हैव आई हैव आंसर योर क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सर. ओके. एनी ओके, क्वेश्चंस, थैंक यू. एनीवन एल्स? ओके. आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. सपोज एक मैं वो स्लाइड ओपन करता हूँ पहले. एक जनरल क्वेश्चन है. ओके, ये सीमेंट है. सी, ये सीमेंट के पैरामीटर्स है. फाइननेस, साउंडनेस, सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट. ओके. सो अगर मुझे इनमें से कोई टेस्ट कराना है, तो मैं अगर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कराऊंगा टेस्ट, if I only do compressive strength test of the cement, will it
be okay to use it just only getting this result. मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक कर लिया एंड देन कैन मैं मतलब क्या मैं यूज कर सकता हूँ ये सीमेंट? नहीं, व्हाई? because this soundness, that is, you have this IS 40131 has mentioned the soundness should not be 10 mm. नो इट्स ओके बट हाँ, सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अल्टीमेटली तो मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही चाहिए ना सीमेंट का, तो मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करके उसको यूज क्यों नहीं कर सकता? नहीं सर, मुझे जब सारे यूज होगा, सारे पैरामीटर्स क्यों चेक करने? व्हाई वी हैव टू चेक दिस ऑल पैरामीटर्स? नहीं जब फील्ड में यूज होगा ना, वो तो साउंडनेस का भी देयर विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द साउंडनेस आल्सो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपांशन विल बी देयर. ओके ओके That should एंड be व्हाट in एल्स? the field while using in the field, in the building or dam or whatever करेक्ट it may be. करेक्ट करेक्ट इसी Yes. फाइननेस सबकी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है. ओके हाँ जी. मानते हैं कि लाइक 43 ग्रेड कंक्रीट है एंड हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दिया एंड हमें मिल भी गया 43. सो ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लिया एंड यू कैन यूज इट. ओके फाइननेस की अपनी अलग प्रॉपर्टी है. फाइननेस हाँ जितना जी. ज्यादा फाइन होगा उतना ज्यादा खराब से होगा. हाइड्रेशन होता है. ओके एंड साउंडनेस की जैसे आपने बात की एक्सपांशन, हाँ जी. मतलब अगर आपने कंक्रीट कंक्रीट में कास्ट कर लाइक वो सीमेंट यूज किया है, ओके सो अगर वो साउंड सीमेंट नहीं है सो वो एक्सपांड होगा एंड हाँ जी. अननेसेसरीली अंदर से लाइक क्रैक्स फॉर्म हो. क्रैक्स डेवलप होगा. ओके सॉल्व सो आप कर सकते हैं कैटेरियल मेथड से, आपको 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आप टेस्ट करके देख सकते हैं। राइट एंड सेटिंग टाइम की भी अपनी एक लाइक ऐसी अलग अपनी प्रॉपर्टी है. अगर ज्यादा लाइक इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से पहले हो जाता है सो दैट मीन्स कि वो फास्ट हार्डनिंग हुआ है. ओके सो देयर इज सम मिस्टेक इन दैट सीमेंट. ओके सो सिमिलरली सारे फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है उनकी अपनी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है. वी हैव टू चेक all the parameters in the lab. Okay. Well, thank you so much. Now, ma'am, over to you. Before that, I would like to thank Mr. Vijay sir. The session was highly informative and easy to understand. You demonstrated strong knowledge of material testing and quality control practices. Overall, it was a well prepared and informative presentation. We are going ahead. So ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, made in Gujarati, Marathi, Telugu, in Hindi. Feedback form. On तो पैदा भी होना होता है, वो तो BURN पर दोनों का उच्चारण सेम ही है ना. feedback form, please register on www.sadgunsam.org and go in your login and give feedback.
We officially close today's Sadgun Sang. I would like to thank our speaker and all participants for their valuable time and active participation. We hope you found the session informative and useful. Have a nice day.